Dear students, Assalamu alaikum. As you know that हमने कल जो यूनिट स्टार्ट किया था that was chemical reactions and equations, the chapter number first from chemistry. And मैंने आपको वहाँ पर बताया कि chemical reactions वो processes होते हैं जिनमें नए substances बनते हैं, और जो नए substances बनते हैं उसमें नई प्रॉपर्टीज होती है. मैंने आपको बताया कि द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. मैंने आपको बताया कि जो सब्सटेंसेस है दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. तो आज हम बात करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, होता क्या है, द सब्सटेंसेस which take part in the chemical reactions, the substances which take part in the chemical reactions, as you know, they are called reactants. The substances known as reactants which take part in the chemical reactions, the reactants are converted into new substances. Reactants convert gasan nayan substances. Taman substances kya है इसमें ना, products. They are called products. So it means that we can say the conversion of reactants into products in a chemical reaction. जब इनका कन्वर्जन होता है, जब रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन होता है इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, इट इज accompanied by some features. It is accompanied by some changes, यानी कि अच्छी चेंज गसान पोद येले during conversion of reactants into products की चेंज शायद इमान की फीचर्स पोद गसान नम एस ऑब्जर्व हैको करत इजीली, नम एस ऑब्जर्व, नम एस विचित हैको आराम से हैको इस तुम विचित. सो ये थयु तो जहनस में कत तम इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स, तम चेंजेस नम एस विचित हैको, नम during chemical reactions पद गसन, तमन छे इस वनान कि they are called characteristics of chemical reactions. They are called characteristics of chemical, the easily observable features, the easily observable changes which takes place as a result of chemical reactions. They are known as characteristics of chemical reactions. और यहां पर मैं आपको बताने जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की. वो है सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस इवॉल्व होता है, गैस निकलता है. कैसे निकलता है मैंने आपको बताया. The conversion of reactants into products is accompanied by some observable changes. The changes are called characteristics of chemical reactions. Among them, the evolution of gas is one. So we can say on mixing the two substances during a chemical reaction, gas is evolved there, gas is produced there. So this is the characteristic of chemical reaction, that during the chemical reaction evolution of gas is taking place. तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा. फॉर एग्जांपल जिंक ग्रेन्यूल्स जो हैं, जो ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, when these zinc granules react with dilute
सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट होते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वहां पर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. सो after this, we can say that the chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. फॉर एग्जाम्पल हम इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं. वी विल टेक द जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क. हम कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, या हम टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, हम उसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे. जिंक ग्रेन्यूल्स जिसमें डाल दिए हमने टेस्ट ट्यूब में, उनमें उसमें हम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, और वी कैन सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस देयर अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स. So we are able to say that when the zinc granules react with the diluted sulfuric acid, the bubbles of hydrogen gas can be seen. Here I would like to say you that when we go to touch the conical flask, when we go to touch the test tube, we will see the test tube, the conical flask will become hot, somewhat hot. So another change, that is change in temperature, can be seen. तो इसके बारे में दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनता है. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है. एक्चुअली द प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट. प्रेसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट आसान यु सेपरेट गसान फ्रॉम द सॉल्यूशन. precipitate is a solid product which separates from the solution during the chemical reaction. जब chemical reaction होती है तो from the solution चा आसान, as you know what is solution, solute, solvent, you have studied at it in the 9th standard. तो यहाँ पर जो है precipitate जो है it is produced, it is a solid product, it is produced, it separates out from the solution when the solution undergo the chemical reaction. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्मड बाय मिक्सिंग एक्वा सॉल्यूशंस. जब हम एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, वाटर सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जब एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा, that cannot soluble in water, precipitate will be formed by passing a gas into an aqueous solution. For example, passing carbon dioxide gas into lime water. तो यहां पर हम बात करते थे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की. एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जब हम सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी कि वी विल मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, वी विल सी द yellowish precipitate of lead iodide. It means that lead iodide will be formed there. Dear students, as you know, the video is will be of much megabytes and it is difficult to me to upload. तो नेक्स्ट जो है थर्ड वन characteristics of chemical reactions is change in color. When the chemical reaction is taking place, in certain chemical reactions, the change of color is taking place. For example, I will tell you the example when the potassium permanganate solution reacts with the citric acid, and we know that the potassium permanganate solution is of purple color. And when the chemical reaction is taking place there,
the purple color of the potassium permanganate solution disappears and it becomes colorless. That means in a chemical reaction, there is also the change in color. So change in color is also a characteristic of chemical reactions. The fourth characteristic of chemical reaction is change in temperature. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं और हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो जब हम टच करेंगे कोनिकल फ्लास्क को, it will be seen that the conical flask will become little bit hot. So there is change in temperature. This is the example of change in temperature. तो another example मैं आपको बताऊंगा. Quick lime जो है, when it reacts with water, slacked lime is formed there. And with the result, lot of heat energy is produced, which raises the temperature of the reactants, which raises the temperature of the reaction material. It means that we can say that the reaction material becomes hot. So change in temperature is a characteristics of chemical reactions. Moreover, the fifth characteristic is change in state. For example, I have told you that burning of candle is a chemical reaction. Wax जो है, जब हम उसको बर्न करते हैं, water and carbon dioxide is produced. We know that the wax is a solid material, water is a liquid material, carbon dioxide is a gas. We know that there are three states of matter: solid, liquid, gas. Wax was the solid. When it is being burned up, water is produced, it's a liquid. Carbon dioxide is produced, it's a gas. It means that physical state of wax, that is solid, it changes into liquid and gas as water and carbon dioxide. Thank you, students.